This is your secret to cracking class 10 maths. Save this video and follow along for 100 essential questions. Question number 64. Solve the equation 4x square plus 4xb minus into bracket a square minus b square equal to 0 using the factorization method. Very interesting question. So first of all, if you open the bracket, we will get 4x square plus 4xb minus a square minus plus b square equal to 0. अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन टर्म्स हैं उनको ऑब्जर्व करो, राइट. 4x स्क्वायर प्लस 4xb एंड b स्क्वायर, दे आर फॉर्मिंग अ कंप्लीट स्क्वायर. ओके, सो इफ यू ओपन द 2x प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर यूजिंग द a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला, वी विल गेट क्या मिलेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4xb प्लस b स्क्वायर, सेम थिंग. ठीक है, सो वी कैन रिप्लेस दिस विथ 2xb ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, 2xb ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, x square minus y square, x plus y, x minus y. ठीक है, x is 2x plus b and y is a. Okay, so if you apply that formula, first bracket में आएगा 2x plus b plus a और second bracket में आएगा 2x plus b minus a. Equate each factor to 0. So 2x plus b plus a equal to 0 will give you x is equal to minus into bracket a plus b upon 2. और second factor जो है हमारा that is 2x plus b minus a, उसको 0 से equate करेंगे, we will get x is equal to a minus b upon 2. Okay, so these are the solutions of the given quadratic equation.